Petra. You can Petra. just You one want to bit. go to Petra? Yes. Yeah, come. I don't understand, but I like it. Hindi language. Bazu. Badu. Baju. Assalamu alaikum, guys. Right now we are heading towards Petra from Amman. And this is our captain Abu Amir. I don't understand, but I like it. दोस्तों इस वक्त हम जा रहे हैं पेट्रा पे। तो पेट्रा जाते जाते यहाँ का व्यू अपने क्या व्यू है माशाल्लाह, और क्या मौसम, हो जबरदस्त। So I'm going to take a little bit Let's interview of hi Mr. Abu Amir, how are you? Hi, I am fine. And Good morning. good morning. Where do you want to go? We are heading towards Petra. Sure, Yeah. So Petra is good to visit. very good, very Okay. nice, very beautiful. Okay. One thing I like to ask you is that many of the people, the local over here, doesn't know English language. Why is it so? They only speak Arabic. I speak Arabic because not people too much speak English every time. Okay. Just speak Arabic. But since English is an Arabic language, English is an international language. But in the Petra, the people speak English, Spanish, French, because every time visit people outside Jordan. Okay. You understand? Okay. Because I am finding it very difficult for the people who doesn't know how to speak English. So, and I don't know Arabic. It's getting quite a problem over here. Maybe you need learn Arabic. Arabic? Okay, from tomorrow onwards I will take a tuition. Good morning, صباح الخير in Arabic. Good evening, مساء الخير. You know this sweet Zalatimo? Zalatimo, yeah. Okay. The best in Jordan. Okay, yesterday I had visited Habiba. Habiba and Habiba. Zalatimo. Okay, which one is better? This is Zalatimo is better or Habiba is better? Habiba Knafe. Kunafa. Habiba is Kunafa, the famous for best, kunafa the and best. baklava. Okay. This baklawa Okay, in this is Arabic. okay. Yeah. Zalatimo is for baklava and Habiba is for kunafa. Yeah. Okay. Kaba, Wadi Ram, अच्छा, Al-Batra. तुमको भी बहुत तकलीफ हो रही है भाई इंग्लिश बोलने में। हाँ, जितनी तकलीफ मेरे को समझने में हो रही है उतनी तुम्हारे को बोलने में हो रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बोलते रहो बहुत। अब वो आगे good person। और बाय कैसा है? कैसे सब- और बाय कैसे हाँ, perfect। और और बनता है। बनताई क्या बोलते? क्या बोलते You are learning it too fast, man. जो भी अमान आ रहा है, जॉर्डन आ रहा है, इसके लिए मस्ट विजिट प्लेस है पेट्रा। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो हर किसी को करना चाहिए। और जॉर्डन जो कंट्री है उसमें आना बहुत ही ज़रूरी, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सहाबाओं की, इतने नबियों की यहाँ पे कब्र मुबारक है, इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, और ठंडी में ही आओ भाई। तो हम जा रहे हैं पेट्रा में और अंकल है हमारे साथ में। अंकल, व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद, माशाअल्लाह। इंडिया, अल हिंद। Tell in Arab, Hindi language. Bazu. कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई पुराना जमाना जो था उनका आर्किटेक्चर ही बड़ा हुआ था, जो कई सालों से, 1000 सालों से चलता आ रहा है। फिर उसके बाद में आए अपने इंजीनियर्स जिन्होंने वाट लगाना चालू किए।
Sure, you can. You can. Just one bit. Yes. Come. तो आप देख सकते हैं कि अभी आने वाला है वो मॉन्यूमेंट और वो स्ट्रक्चर। ओ हो। ये देखिए भाई कैसे पहाड़ों को तराश के बनाया होगा। देखने जैसी कला है, देखने से ताल्लुक रखती है भाई। भाई अगर इसकी हिस्ट्री किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि हिस्ट्री में मैं पहले से ही वीक हूँ। बहुत कटिंग मार्क्स पे पास हुआ करता था। पेट्रा की हिस्ट्री अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताना। ये भाई साहब देखो कहाँ पहुँच गए। अच्छा भाई साहब ने पुलिस वाले भाई, पुलिस वाले पहुंचो भाई सही है ड्यूटी उनकी। व्हाट विजिटिंग प्लेस पेट्रा, व्हाट विजिटिंग। सीरियसली पहले मुझे भी ऐसा लगता था क्या वो पत्थर के वो बने हुए वो देखने जाने का, लेकिन अब यहाँ पे आके पता चल रहा है कि क्यों इसको अमंग 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक वंडर्स का किताब दिया हुआ है। व्हाट विजिटिंग प्लेस। Assalamualaikum. Walaikum assalam. Brother, what's your name? My name is Ibrahim. Okay, tell me a short history regarding Petra city. Well, you are now inside one of the Bedouin cave. And this cave, they used to be inside in the past tombs. Because under where you're standing now, it's a tomb. Okay. It's a cave with a tomb. So actually a cave with a tomb. Yeah, because the Nabatean, they believe before when they die someone, they bury them with his tombs, with his money, because they believe in other life. Okay. Yeah. And you can see how the color look like. And this is the cave where after Nabatean and after the Roman, our family, they used to live in it. Okay. We live here more than 700 years. Ah, really? Yeah, and in 1982, when it started better to be heritage site, started the government to think to make it touristic area. There used to be coming more customer tourism. The government sitting with our family, with our tribe, and make agreement to have village for free, and they give us free stores. Okay. Now we make living from the stores. We belong to 5 So families. the main monument which you see over there, It's so temple. What was that? Actually, it was a temple. Yeah, temple for Nabatean people. They believe in other life, and the second floor of it, they burying the people. Okay. When they first burying the persons, they pray for them. Okay. Yeah, and inside they have the big cave. It's carved in good shape, Okay. and they used to the king standing in it, and they used it for a pray. Okay. Somebody thought it's for a living, but no, it's not for a living. Not for living. Ah. Even I thought the same. Yeah. The one outside the decorations, what's taken from Greek style during the Nabateans, and different civilizations. And they became the Roman. They came after and making different decoration of this temple, like especially the lines and the flowers. But there's still many history. No one write the right history about these places. But it's actually Nabatean temple. We find, when we digging, we find some old coins, what's talking about the old money of Nabatean with 2 faces, the king and the queens. Okay. Because those people, they used to they have money and they put the king and the queen in the coins, and the other side, the cornucopia. Okay. The cornucopia mean it's the power for the city. Okay. And where you're standing nowadays, when you walk, still underneath 8 meter, the real level. You have to dig in 8 meter at the real level to find the real main street of Nabateans. Huh.
Yeah. So is it possible for me to go over there? Is it possible for me to go there? No, not allowed, because this is controlled by reserve, The and authority doesn't allow. yeah, they're not allowed. The second floor is not allowed. The first floors, Okay. Okay. because it's protecting. Okay. These caves here, up in the top. If you enter all this cave, it's a tomb. Okay. This cave, it belonged to a poor people. Because why we say for poor people? Because when we're digging in those caves, we find normal coins, and that's present for you. It mean belong to a poor people, not for rich family. But the right hand, they have many palace, and it's called Royal Tomb building. This is belong to rich family, because when we're digging, they find the statue, jar, lamp. What's very expensive, this lamp and jar. Oh, thank you so much, brother. Nice to meet you, brothers. I forgot to ask your name. My name is Ibrahim. Ibrahim, mashallah. I was telling you in the beginning, my name is Ibrahim. Okay, no problem. Thanks a lot. पेट्रा के जाते वक्त बहुत ही हसीन मंजर और एक सिटी टाइप में यहाँ पे है। और एक बात, मैं यहाँ पे आते वक्त मैंने देखा वहाँ पे लिखा था वादी मूसा, तो हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम की जो 12 चश्मे जहाँ पे फूटे थे, हो सकता है ये वही जगह हो, बट आई एम नॉट कंफर्म। तो इसके बारे में मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन वहाँ पे साइन बोर्ड पे लिखा हुआ तो था वादी मूसा। ये भी है ऐसा, और बहुत अच्छे लोग हैं भाई जॉर्डन में, सीरियसली बोलता हूँ, बहुत कोऑपरेटिव। और इंडियंस को तो इतना लाइक करते हैं कि जहाँ पे भी मैं वीडियो बनाने गया तो पहले वहाँ पे वो लोग कोई हार्ट शेप बनाएगा, कोई बोलेगा इंडियंस वी लव यू। तो यहाँ पे बहुत अच्छा और काफ़ी फ्रेंडली माहौल है, और जो कोई भी आना चाहता है बिल्कुल आ सकता है जॉर्डन में, और बहुत फ्रेंडली कंट्री है भाई, खास करके इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है। अबू आमिर भाई हमारे साथ में, हमारे कैप्टन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चलिए भाई, ओके।